Hello and welcome to our special broadcast where Neeraj Chopra has scripted history. He came, he rode and he medaled. Neeraj Chopra has done it again. The current Olympic champion now has a World Championship medal to his credit too. In a very tactical final, Grenada's Anderson Peters won the gold. And even if there was a tinge of disappointment with Neeraj's silver, then that's a reflection of just how good and consistent the Indian champion has been the last few years, where everything he's touched has turned to gold. But it wasn't quite to be tonight. 88 needs to try and put something together here. He's trying to roar the javelin forward. That is more like it. The golden boy of Indian athletics has done it again. Another first for Neeraj Chopra. The reigning Olympic champion is now the first Indian to win a silver at the World Athletics Championship. The 24-year-old Neeraj braved tough conditions to make a strong comeback in his fourth attempt to win India's second ever medal at the World Athletics Championship. That is more like it. Neeraj began with a foul throw before getting himself on the standings with an 82.39 meter throw. हाँ थोड़ी कंडीशन नहीं थी आज काफी हवा थी और मतलब एक दो वम तो होता है थोड़ा मतलब पहले 2-3 थ्रो तक वैसा फील बाद और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी तो लास्ट तक वो था अंदर पर हाँ ठीक है जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में तो कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे इससे. What on earth will he do here in the second? Even as the reigning world champion and the world leader Anderson Peters was throwing everything over 90 meters to surge into the lead, Neeraj was getting into the groove. Back-to-back 90-meter throws. His third attempt was of 86.37 meters. That could only take him to the fourth spot, with the next being another foul. Not there. He says he's going to throw over 90 meters this season and he's gone really, really close. But in his fourth attempt, with pressure mounting, Neeraj hurled the javelin to a distance of 88.13 meters and his reaction had confirmed his place in the history. That is more like it. From Neeraj Chopra. मेरे लिए आज थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था मुझे अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे और बढ़िया है काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है. After Anju Bobby George, who retrospectively won a bronze at the Paris World Championships in 2003, Neeraj is now the only other Indian to achieve this feat. Looked like he was having fun. The arm was relaxed. He came in and hit it. Yes, of course, because if you compare the competition level in athletics, actually more than 200 countries are participating, and it's one of the toughest events in the world. So getting a medal in World Championships or Olympics from athletics, that is something really great. And he got 2 medals from the one from Olympics and one from the World Championships. So definitely we can say that he is the greatest one. Not too long ago, it seemed like a distant dream to expect an Indian to stand on the podium of a World Athletics event. But Neeraj has realized that dream, and every time he walks onto the field, there are hopes of nothing less than a gold. He shot to limelight in 2016 when he won the Junior World Championships before a gold each at the Asian Games and Commonwealth Games. Tokyo Olympics, he broke the glass ceiling with a gold and then a silver in Oregon at the Worlds. At 24, Neeraj has achieved virtually everything. But if you ask him, he says he has just started. Sports Bureau, India Today. That is more like it. Chopra.
And India Today was the first channel to speak exclusively with Neeraj Chopra after his silver medal winning performance. And two things really stand out in that particular interaction. One, when Neeraj Chopra talks about a groin injury that he encountered after he threw that fourth throw, after which he couldn't give his best in the fifth and the sixth. Maybe if he was in great shape, he may have challenged for the gold medal. And the other thing that he says, that listen, he's improving day by day and it's just a matter of days before he touches the 90-meter mark. Okay, with us is the golden boy of Indian athletics. He's won a silver medal, but he is the golden boy. The current Olympic champion now has a world championship silver medal. नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे आज तक से बात करने के लिए. सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आज कंडीशंस के बारे में बताएं, क्योंकि जो आपने क्वालिफाइंग की कंडीशंस थी और आज की कंडीशंस फर्क नजर आई, और ये सिर्फ आपके थ्रो में नहीं, सबके थ्रोज में अगर देखूं उसमें असर नजर आया. कितनी टफ थी आज की कंडीशंस, थोड़ा वो बताएं. जी बिल्कुल, वो तो हर दिन की कंडीशन थोड़ी टफ होती है. आज थोड़ी हवा ज्यादा थी. उस दिन क्वालिफिकेशन राउंड में थोड़ा माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होता है, तो बस फाइनल के लिए क्वालिफाई करना होता है, तो काफी अच्छी थ्रो थी वो. और आज थोड़ा सा हवा और ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ी नई चीज थी, जो कि मैं स्टेडियम में जो नई चीज फेस की थी. पर वैसे भी हाँ, आज थोड़ा स्टार्टिंग की कुछ थ्रोज तक इतना वार्म अप नहीं लग रहा था, पर लास्ट तक धीरे धीरे खिंचता रहा था कंपटीशन. हर थ्रो इम्प्रूव होती आ रही थी. तो फिर अचानक से थोड़ा फोर्थ थ्रो में मुझे थोड़ा सा ऐसे पेन सा हुआ, तो ऐसे ग्रोइन में, तो फिर उसकी वजह से जो है पूरा एफर्ट नहीं लगा पाया लास्ट के 2 थ्रोज में. पर फिर भी जो रिजल्ट है मैं मानता हूँ कि ठीक है, काफी अच्छा रहा. जैसी कंडीशन है काफी कुछ सीखने को मिला और काफी अच्छा कंपटीशन था. काफी थ्रोवर्स को दिक्कत आई, लेकिन पीटर्स ने फिर भी बहुत अच्छे से उस चीज को मतलब काफी अच्छे से मेंटेन किया और उसने काफी अच्छी थ्रो लगाई. आपने, क्योंकि वो चौथे थ्रो के बारे में बात की, मैंने तस्वीरें देखी, आपने उसके बाद पट्टी भी लगाई थी अपने थाई एरिया में, ग्रोइन एरिया में. आपने कहा कि उसके बाद शायद उतने अच्छे थ्रो आपको शायद वो नहीं फेंके गए, 5th या 6th जो आप फेंकना चाहते थे. मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई ज्यादा एज अ फैन परेशानी की तो बात नहीं है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अगले हैं. वो थाई ठीक है आपकी? होपफुली अच्छी हो जी. वो सुबह पता लगेगा, क्योंकि अभी वार्म अप होते हैं, तो अभी इतना वो नहीं पता लगेगा. तो सुबह पता लगेगा, चेकअप वगैरह करेंगे, फिजियो देखेंगे, या फिर कुछ अगर कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो वो कोशिश करेंगे हम. तो होपफुली ठीक ही हो जी. आशा तो यही करते हैं कि ज्यादा दिक्कत ना हो और कॉमनवेल्थ में अच्छे से जाएं. अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, जब आप आए हो काफी एक ब्रेक के बाद, ओलंपिक्स का आपने ब्रेक लिया, उसके बाद से जो आपने परफॉर्मेंस किया, आप ऑलमोस्ट 90 टच करने वाले हो. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने पढ़ा कहीं आपने टेक्निक पे काम किया, आर्म स्पीड पे काम किया, क्या वो चीजें गई हैं कि आपका परफॉर्मेंस ओलंपिक से भी बेहतर होता जा रहा है? बस वही था, जितना भी टाइम मिला है. वैसे तो अगर मैं बताना चाहूँ तो काफी कम टाइम था. मतलब ओलंपिक के बाद हमने थोड़ा लेट ट्रेनिंग स्टार्ट की, जैसा कि आपको पता है. पर जितना भी टाइम मिला उसका अच्छे से यूज हुआ, और काफी अच्छे हमने थ्रोइंग सेशन वगैरह में काफी अच्छा टेक्निक पे काम किया, रिलीज एंगल पे काम किया, और अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, फिटनेस पे जो भी फिटनेस की कोशिश की कि भाई और इम्प्रूवमेंट करें. तो जितना भी टाइम था उसका काफी अच्छे से यूज हुआ. और थ्रो है जो इस साल की काफी कंसिस्टेंट है, तो वो बहुत अच्छी बात है. हाँ, मतलब 90 नहीं लग रहा है, बहुत क्लोज है उसके. पर वही है कि हर कंपटीशन में मुझे लगता है कि हाँ शायद इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा. पर कोई नहीं, जब भी होना होगा वो कौन सा दिन होगा वो उस दिन ही होगा. पर फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, तो इस चीज की काफी खुशी है. एक चीज मुझे बताएं, क्योंकि ना हमारे दर्शकों को शायद ये ना पता हो, एक एथलीट ये चीज अच्छे से बता सकता है कि लोग कहते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप कई बार ओलंपिक से भी ज्यादा टफ होती है. क्या ये सच है, और क्यों इसको इतना टफ बनाती है वर्ल्ड चैंपियनशिप? वो क्या चीजें हैं? बिल्कुल जी, ये सच है. अगर आप रिजल्ट्स देखोगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के, तो ओलंपिक्स से ज्यादा ही रहते हैं. और इसका जो चैंपियनशिप रिकॉर्ड है, जैसे ओलंपिक्स का 90.57 मीटर है, और उनका एंड्रेस थोरकिल्सन का, और वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो चैंपियनशिप रिकॉर्ड है वो 92.80 मीटर का है, जैन लेजनी का. तो चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी ज्यादा है. और आप डिस्टेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के ज्यादा मिलते हैं ओलंपिक्स से. उसका एक ये भी कारण हो सकता है कि भाई हर 2 साल बाद आता है एक तो, और एक ओलंपिक का जो 4 साल का प्रेशर होता है, शायद से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना नहीं होता. और इतना क्योंकि ये सिर्फ एथलेटिक्स का होता है, और इसके लिए भी एथलीट काफी प्रिपेयर होते हैं. तो ये रीजन हो सकता है कि हाँ हर साल 2 साल में आता है, तो शायद एथलीट को मौका ज्यादा मिलता है वो करने का.
आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, आपके साथ साथ रोहित यादव भी आए फाइनल में, अनु रानी विमेंस फाइनल में गई। आपको लगता है और आपको ये पता है कि आपके एक जैवलिन मेडल से कितनी एक जैवलिन रेवोल्यूशन सी आ गई इंडिया में? आपको कैसा लगता है, खुशी होती है देख? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा खुशी थी कि जितने हम 3 जैवलिन थ्रोअर्स यहाँ इतना बड़ा कंपटीशन था तो उसने भी अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म किया और उसके पास फ्यूचर है पूरा, वो अच्छा करेगा। अन्नू ने बहुत अच्छा किया, सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में मतलब फाइनल में पहुंचे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। और मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ जेवलिन थ्रोअर्स का नहीं, ऑल ओवर सभी एथलीट्स ने बहुत अच्छा किया, काफी एथलीट हमारे फाइनल में गए और अच्छा किया। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे को टाइम देने के लिए, हमारे से बात करने के लिए। विशिंग यू द बेस्ट ऑलवेज। कॉमनवेल्थ गेम्स 7 अगस्त, हम उसका वेट कर रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। All right, that was Neeraj Chopra speaking exclusively to India today. Fingers crossed that that groin injury is nothing serious, because mark your dates, 7th of August, that's when he's going to be up against Anderson Peters, the one who won the gold medal. And it is, that man from Grenada. The two have been competing, going shoulder to shoulder for the last 6-7 years, and they'll be up against each other. That will be on 7th of August at the Commonwealth Games, and you'd have to watch out for that particular contest. Here's hoping that that injury, or the brief injury that that Neeraj suffered at the time when he was throwing his fourth throw, gets better with time. Now, talking about a World Championship medal, by now you know that Neeraj has become only the second Indian to win a medal at the World Championship. Who was the first? Well, that will be part of a quiz question. The answer to that is Anju Bobby George. She won in 2003, 19 years ago, in the long jump, and we spoke to her, and this is what she had to say when comparing her feat against what Neeraj has achieved now. As far as athletics is concerned, World Championship is the highest one. Though Olympics by name, that is yes, having a different, altogether different feeling. But as far as athletics concerned, World Championship is the highest one. And getting a medal from the World Championship, it's a World Champion title if you win the championship. And if you are able to win a medal in the World Championship, that is ultimate. Actually, I can say that. And we got this is our second medal, and bronze and silver. And he already is having a Olympic medal in his kit. So this is it. Now he is nothing is more. He need to show. He need to show the world. He, 2 medals in his kit. That was Anju Bobby George, the only other Indian apart from Neeraj Chopra to win a medal at the World Championship. As I mentioned earlier, her medal came in 2003 in the long jump category. But you heard from Anju there, where she said that sometimes a lot of people regard the medal at the World Championship even higher than the Olympic Games. You heard it from Neeraj Chopra also accepting that fact. We asked the same question to Yogeshwar Dutt, an Olympic medalist, and he tried to explain to us why is it that the World Championship medal is considered higher. क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक में क्वालिफाई करना होता है, जाके कुछ चुने हुए खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक में, एक लिमिट बांध देते हैं, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सभी पार्टिसिपेट करते हैं ज्यादातर, इसलिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं पता कब कौन निकल के आ जाए, कौन चैंपियन बन जाए। जैसे ओलंपिक में देखिए आप कि नीरज चोपड़ा का चैंपियन ओलंपिक चैंपियन बना, जब नहीं साथ की नीरज चोपड़ा ओलंपिक चैंपियन बन सकता, उसके बाद वो ओलंपिक चैंपियन बना, सबके 20 में से निकल के उसने देश के लिए गोल्ड जीता। ऐसे ही यहाँ पे कोई नए बच्चे आ जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ज्यादा वो कम्पिटिशन करना ज्यादा होती है, प्रतिभा की ज्यादा होती है, तो इसलिए नहीं पता होता है कि भाई कौन क्या निकल के आ जाए। और ऐसे ही इसका यहाँ पे भी वो चीज लागू होती है एथलेटिक्स में भी, कि कौन नया चैंपियन निकल के आ जाए। जैसे नीरज चोपड़ा खुद चैंपियन बन के निकले थे टोक्यो ओलंपिक में, और उन्होंने अपनी बात से यहाँ पे कहा है कि देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। Now remember, Neeraj Chopra took an extended break after the Olympic Games to sort out a few technical issues that may have crept into his javelin throwing, and a few things that he worked on was his arm speed. That is something that he worked on. A few other technical issues were being worked on, and the man behind all of this is Clark Bartonese, his coach, also a biomechanics expert. He spoke to us after Neeraj Chopra's silver medal at the World Championship. How difficult were the conditions? Neeraj did touch upon
the wind conditions there? How difficult were the conditions? Oh, it was a tough competition, not so much by the external, by the wind or so, but by the competitors. There were 4 or 5 guys at this level. I mean, and it was very tough, just a few centimeters between the places. So that was a fight. That was a real fight. And it was to see at the warming up, nobody messed it up. They have all shown that they are in a good shape. Did you have a word with him in between the competition after his first throw, second throw, or between the third and fourth throw? Yeah, but we know that he had this first because there was some little bit mismanagement maybe by the organizers. He was not ready to. He didn't get the announcement that the competition starts, so he was under time pressure, and it was affecting the concentration. So the first throw was not the best one, so he had to fight, and then it takes some effort to come into the competition. Yeah, we had some 3/4, but not so big. He knew what to do. He's pretty experienced. We spoke to Neeraj Chopra a short while ago exclusively on India Today, and one thing that he assured all his fans is that it's just a matter of days before he touches that 90-meter mark. We also, heard from his parents, his mother and father, all of them celebrating. In fact, the entire nation woke up at 7 a.m. on a Sunday morning to watch their favorite son, Neeraj Chopra, participate in that final of the World Athletics Championship in the javelin. And whilst the entire country woke up at 7 a.m. on Sunday to cheer for their favorite son at the World Athletics Championship, things were no different at Neeraj Chopra's village in Haryana too, where a sea of people gathered to witness the historic moment. And after their boy won the silver, there were celebrations galore. Here's a special report by our correspondent Nitin Srivastav, who watched the finals with Neeraj's family in Panipat. In the javelin, needs to try and put something together. नीरज के पिताजी को यहाँ पर मिठाई खिलाई जा रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सिल्वर जीत पाया, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत खुशी, अपार खुशी। ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास। Neeraj Chopra became a household name. Every time Neeraj Chopra wins a medal, the country celebrates. History for him, the first Indian to win a World Championship medal to go alongside that Olympic gold. But these are images of people who have lived through Neeraj's journey right from the moment he started. Folk songs could be heard even from a distance, and age was no barrier, as people of all ages put their dancing shoes on and the celebrations never stopped. Parents, relatives and the entire neighborhood in Panipat got onto their feet to celebrate the success of their son of the soil. माँ को कितनी खुशी है, माँ क्या कुछ कहना चाहिए? माँ के बहुत खुशी है जी, देखो वहाँ तक पहुँचने के बहुत मुश्किल है, गोल्ड या सिल्वर उसकी इतनी खुशी है। हाँ जी, भगवान उसकी मेहनत का फल दे रहा है और कौन बागेल था उसका भी। Neeraj's father was glued to television with family and friends right from the morning to see their child win another global competition. As if they were more confident about Neeraj's success than Neeraj himself, the sweets were all ready and the Panipat boy did give them the opportunity to have them too. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज तक अपने देश के पास एक ही मेडल था और दूसरा अब जीत पाया है नीरज, तो हमें बहुत ही खुशी है।
For someone who took to athletics only to cut down on his weight, Neeraj has come a long way, and so has this small hamlet Khandra in Panipat. With Nitin Srivastav in Panipat, Sports Bureau, India Today. Right, such endearing images that you saw at Neeraj Chopra's village, where the entire community got together to celebrate the performance of Neeraj Chopra at the World Athletics Championship. That's all that we have on this very special broadcast, but news updates continue on the other side.